Hi everyone, it's Math with AUB. For the preparation of quantitative mathematics for the examination of SAT, GRE, IBA, our question in the field of percentage liquid evaporation type reads as 1 liter of water is evaporated from 6 liters of a solution containing 5% salt. The percentage of salt in the remaining solution is, we have 6 liters of a solution containing 5% salt. We have given 6 liters of a solution containing 5% salt. If 1 liter has been evaporated, the percentage of the salt in the remaining solution. The gist behind the solving this question is that salt doesn't evaporate. The quantity of salt remains same in the original 6 liter after the evaporation. After when the solution will become liquid solution will become 5 liters, the quantity of the salt remains same. So we have to determine what is the quantity of salt in 6 liters. Actually means we have to calculate from 6 liters the 5% quantity of salt. 5% in 6 liters, removing percent sign, dividing by 100, I have 2, applying table of 3, 2 3 is 6, 1 0. 3 over 10 means 0.3. So in these 6 liters, 0.3 liters is salt. In 6 liters, actually, originally 0.3 liters are the salt, and salt remains same throughout, whether prior to evaporation, after evaporation, salt remains same. From 6 liters, 1 liter has been evaporated. Now we have 5 liters. Lump sum, water has been evaporated. 1 liter of water has been subtracted 5 liters. But quantity of salt remains same. Now we have to hunt down what percent of 5 liters is equal to 0.3 liters. What percent of the remaining 5 liters? What percent of the remaining 5 liters is 0.3? Because 0.3 is the quantity of the salt throughout prior to evaporation, before evaporation, as well as after evaporation. Okay, do away with percent sign, dividing by 100, we have 0.3. Shift 100 here, it will become 0.3 times 100, it's 30. Solve for x, I have 5x is equal to 30, or x is equal to 30 over 5, that's 6. Means 6%. 0.3 in 6 liters, 0.3 in 6 liters, it is 5% of the salt. And after the evaporation of 1 liter of water, salt remains same. The gist idea behind hunting down this question is salt remains same. Quantity of salt remains same, that is 0.3 in 6 liters as well as in 5 liters. After evaporation of 1 liter of water, I have written down what percent of 5 is 0.3. Salt remains same. So that is 6%. In 6 liters, 5% is 0.3. In 5 liters, 0.3 is 6%. Let me explain to you this question in Urdu as well. आइए ये क्वेश्चन उर्दू में मैं एक्सप्लेन करता हूं. सॉल्व तो उसी मेथड से होगा, उसी तरीके से होगा. इट्स ओके. 1 liter of water evaporated from 6 liters. अगर पानी 6 लीटर में से 1 लीटर भाप बनकर उड़ जाता है, 6 लीटर में से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है. इनिशियली इन 6 लीटर में से 5% सॉल्ट है. इन 6 लीटर में 5% सॉल्ट है. हमें परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट बताना है इन द रिमेनिंग. Starting in 6 liters, there is 5% of salt. After the evaporation of 1 liter of water, हमें salt की परसेंट बतानी है. पहले हम 6 लीटर में मालूम करेंगे कि salt कितना आ रहा है. Salt मालूम करते हैं जी, 5% है 6 लीटर्स में. 5% है 6 लीटर में. परसेंट का सिंबल हम हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे. We are familiar. Applying table of 2, 1 5 5 2 5 10 0 7. Then applying table of
2 3 times and 10 times, दैट इज, ये है हमारा 3/10, जिससे हम 0.3 लिख सकते हैं। ये मैनिपुलेशन आपको पता हो। मेन रीजन और लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए? सॉल्ट 0.3 लीटर्स ही रहना है बिफोर एवापोरेशन, आफ्टर एवापोरेशन। पानी एवापोरेट होता है, पानी भाप बनकर उड़ता है, ना के नमक। सो सॉल्ट की क्वांटिटी उतनी ही रहनी है, सॉल्ट की क्वांटिटी उतनी ही रहनी है। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि रिमेनिंग 1 लीटर एवापोरेट हो गया, बाकी हमारे 5 लीटर्स बचे। 5 लीटर्स का क्या परसेंट 0.3 है? 6 लीटर थे, उसमें 5% सॉल्ट था, हमने कैलकुलेट किया, जो कि है 0.3 लीटर्स ऑफ द सॉल्ट। 0.3 लीटर्स ऑफ द सॉल्ट। 1 लीटर पानी एवापोरेट हो गया, लेकिन सॉल्ट वही रहना है, सॉल्ट वही रहना है, सॉल्ट की क्वांटिटी वही नहीं है 0.3। अब 6 की जगह हमारे पास 5 लीटर्स, उनमें हमने परसेंट मालूम करना है। 0.3 कितना परसेंट हुआ, सॉल्ट का क्या परसेंट हुआ? 6 के लिहाज से तो 5% हुआ। 5 लीटर के लिहाज से 0.3 कितना होगा? 5 के लिहाज से 0.3 कितना परसेंट है? 5 के लिहाज से 0.3 कितना परसेंट है? हमें पता है, परसेंट हटाना है, 100 से डिवाइड करना है। ये आ गया हमारा 0.3, 100 को उधर ले आए। 5x इज इक्वल 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 300 इंट्रोड्यूस डेसिमल है, तो ये 30 हो जाएगा। 301 के बाद पॉइंट लगाएंगे, दैट 30। सो x इज इक्वल 30/5। सो x इज इक्वल 6%। सो x इज इक्वल 6%। 6 लीटर में 5% जो सॉल्ट था, 1 लीटर पानी के एवापोरेट होने के बाद जो कि 5 लीटर रह गए, 5 लीटर रह गए। सॉल्ट की क्वांटिटी 6 लीटर में भी 0.3 थी, 5 लीटर में भी 0.3 है। 6 लीटर में भी 0.3, 5 लीटर में भी 0.3। सॉल्ट नमक भाप बढ़ के नहीं उड़ता, भाप बन के नहीं उड़ता, एवापोरेट नहीं होता। तो हमने ये बताना था, ये हमने हंट डाउन करना था कि 5 का क्या परसेंट 0.3 बनेगा, 5 का क्या परसेंट 0.3 बनेगा, जो हमने कैलकुलेट किया, जो कि 6% आया। तो हमारा राइट ऑप्शन इन दिस केस में डी है। इट्स माय टाइनी एफर्ट टू एक्सप्लेन टू यू a good question of quantitative mathematics. It's all by itself. Next.